Hi everyone, Crickbucks is back. So, रेड बॉल क्रिकेट खत्म हो चुका है, रणजी सीजन खत्म हो गया है। वहां पे इंडिया ने जीत हासिल करी है इंग्लैंड के अगेंस्ट और यहाँ पे मुंबई जीत गया है अपना 36 32 आई डोंट नो कितना। 48। 38, थैंक यू। तो वो फोर्टी भी सेकेंड जीत गए। 40 सेकेंड 40 सेकेंड मतलब हम दोनों ही गलत थे, गिरी तो और आगे निकल गए। चलो 40 सेकेंड। तो अब इंडिया का त्योहार, वाइट बॉल क्रिकेट बोनांजा, आईपीएल इज कमिंग एंड हम लोग लेके आए हैं अपनी आईपीएल सीरीज। और आज हम सबसे पहला वीडियो बना रहे हैं माय फेवरेट चीकू भैया की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऊपर स्क्वाड रिव्यू वीडियो। सो भाई लोग, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई सपोर्ट आरसीबी एंड यू नो व्हाई। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट। पहले तो मैं, बिफोर वी टॉक अबाउट द स्क्वाड, आई थिंक आई वांट योर ओपिनियंस एंड आई नो यू विल हैव लॉट ऑफ ओपिनियंस अबाउट दिस, बट how do you rate the auctions which has happened जहां पे आरसीबी ने जाके कुछ अननेसेसरी बड़ी वेird ट्रांजैक्शंस की हैं और कुछ प्लेयर्स को छोड़ दिया और कुछ प्लेयर्स को ले लिया है। वो हाउ डू यू रेट देयर ऑक्शन 2024 फॉर आईपीएल? यार मेरे हिसाब से आई थिंक आरसीबी हैज डन रियली वेल। जो एक उनका जो मास्टर स्ट्रोक था मुझे बहुत पसंद आया कि भाई दे गेव अप जॉश हेजलवुड और उसके बाद उन्होंने देखा कि 5 छक्के एक ओवर में कौन खा सकता है। तो उन्होंने देखा अच्छा यश दयाल ने खाए थे, तो उन्होंने 5 करोड़ रुपए दे दिए यश दयाल को कि तू आ जाओ हमारी टीम में। But to RCB's और defense on उसके that, बाद Josh फिर Hazelwood is not available for the whole IPL. भाई बात तो आप पूरी करने दो ना यार। आप तो पहले डिफेंसिव हो जाते हैं। आरसीबी की प्रॉब्लम ही है, यू गेट डिफेंसिव सो अर्ली ब्रो, रिलैक्स। इस साल और कप उसके नाम बाद दे ब्रो। बस ये शुरुआत पहले गेम के बाद ये बंद हो जाएगा। देख भाई, आधी कन्नड़ और आधी हिंदी जो बोली ये वैसे ही ना समझ आई। तो और उसके बाद जॉश हेजलवुड के बाद इन्होंने कहा कि हम देंगे 11 करोड़ रुपए अल्जारी जोसेफ को, ये है हमारा मेन बॉलर। ठीक है, तो जो आपने जो स्मार्ट मूव करा है, नथिंग चेंज। आरसीबी आज भी वही टीम है, बैट्समैन 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 खिलाओ। ठीक है, बॉलिंग का कोई लेना देना नहीं है। चेन्नई से हम कभी जीत नहीं सकते, मुंबई हमें प्लेऑफ में हमेशा ही हरा देगा। ठीक है, तो सेम टीम सेम रिजल्ट। आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। विराट कोहली के हम फैन है भाई। एक दो मैच में अच्छा करेगा, कोहली जिताएगा, खुश हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं होना है इस टीम का एज यूजुअल। और सबसे मेन बात, जब तक करण दीवान नाम का एक सपोर्टर है ना इस टीम का, इस टीम का कुछ नहीं होना है। एनीवेज, अभिषेक गिरी, आप ओवर क्या टू कहना यू ब्रदर। चाहेंगे? यार एक तो आरसीबी वैसे ही इस बार ये बता, सोशल मीडिया पे टाइटल जीत रहे हैं या प्लेऑफ्स में पहुंचेंगे? देखो, प्लेऑफ्स में तो हम पहुंच जाएंगे जैसे कुछ ने कहा, उसके बाद हम मुंबई से हार जाए वो बात अलग है। नहीं बट यार मेरे को, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द स्क्वाड, मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है, बहुत पैसा खर्च किया भाई, एक स्पिनर पे भी कर लेते इंटरनेशनल वाले। आई एग्री। मतलब आई डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड कि क्या थी वो स्ट्रेटेजी टू नॉट गो फॉर अ स्पिनर। वानिंडो असरंगा को रिप्लेस करने के लिए इंटरनेशनल क्वालिटी का एक स्पिनर होना चाहिए था, जो कि मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगा। आई डोंट नो व्हाट दे आर प्रेडिक्टिंग इन टर्म्स ऑफ विकेट्स या क्या। एंड आई नो 7 matches would be in Chinnaswamy, but the remaining 7 would be in variety of wickets, so did not make sense. अरे वो एक सेकंड, आई थिंक वो स्पिनर इसलिए लिया उन्होंने, वो हर 6 ओवर के बाद फिर ना 6 ओवर के बाद क्राउड बोलना शुरू हो जाएगा कोहली को बॉलिंग दो। बस, और कुछ नहीं कब होगा। कोहली ऑफ स्पिन करवाएगा? सब कराएंगे आज, ऑफ स्पिन लेग स्पिन सारी चीजें। No, but to Giri's point, I agree. To be very honest, even though I'm a fan, but I have to be a critic as well on this case. I think their auction was poor. Matlab, they could have, bought Hasranga because इतना कोई महंगा भी नहीं बिका. I think 1.5 करोड़ या कुछ में हैदराबाद ने उसको खरीद लिया. So they could have gone. प्लस मुझे ये नहीं समझ आया कि पैट कमिंस पे वो 20 करोड़ तक कैसे गए और उसके बाद पता नहीं किस भगवान का शुक्र था कि वो हैदराबाद ले गया उसको। अगर ये 20 करोड़ उसको दे देते तो 24 करोड़ में से 20 करोड़ तो इनके गए थे। So I still don't know what was the thought process behind it. And then suddenly at the Yeah. later half they started buying all the all round वो pacers. Yeah. And I think सबसे बड़ी problem नहीं है या क्या है, the top six are very strong I feel. With Cameron Green coming into the play, like in terms of batting, I think they are very solid. Maybe इनका वही mindset है कि भाई अब चिन्ना स्वामी तो सबने पिटना ही है, तो भाई पेसर्स इकट्ठे कर लो,
स्पिनर आई थिंक डिपेंडिंग एक स्वप्निल सिंह उन्होंने लिया है ऑलराउंडर who bowls orthodox spin, and then they have Karan Sharma. So that means one of them will definitely be playing as a prime spinner along with Glenn Maxwell. Yeah. So maybe Chinnaswamy may top six heavy might work in their favor, but I don't know if they are a good. Huh? बॉलिंग भी डालनी पड़ती है चिन्नस्वामी में. It's I not just know. That means either they नहीं, are chasing all the time or they have to score 200 plus in every game. बट करण जितने बड़े आप सपोर्टर हैं तो आप मेरे को ये बताइए आरसीबी के पहले टॉप 6 प्लेयर बताओ जो Yeah, they. बैट्समैन या Yeah, ऑलराउंडर I होंगे. think that's हाँ, that's कौन है? pretty solid. पहला तो obviously आपका कोहली और Faf will open. Then ठीक है. part Kohli has not been part of any cricket from last like almost 2 months. Faf has been super duper out of form in South African League. अब आप तीसरे नंबर पे हैं. yeah, the form is very subjective for these players. So uska Yeah. ठीक है, I agree, and I buy your point, but I don't know if form implies in these guys' case. But sure, still, irrespective, you're not gonna drop them if they're out of form, right? So Yeah. Faf, Kohli, then either they have an option of playing Patidar at number 3 or Cam Green. Cam Green, why I'm saying is because Cam Green has always scored runs, big runs for Mumbai when he's playing in the top 3, right? Hmm. तो या तो पाटीदार खेलेगा या कैम ग्रीन, देन दैट मीन्स कि भाई जो आपका ग्लेन मैक्सवेल है ही गेट्स पुश टू नंबर 5, विच इज अगेन अ क्वेश्चनेबल थिंग कि भाई मैक्सवेल ने नंबर 4 पे लास्ट ईयर ही प्लेड रियली वेल, राइट? Okay. तो ये हो गए आपके पहले 5. उसके बाद देन यू हैव लोमरोर एंड देन आइदर लोमरोर कम्स इन और दिनेश कार्तिक. सो दीज आर द टॉप 6 दे हैव, which I feel if they are having a good season, they are a good Yeah. strong batting unit. But I have my speculations on Okay. this squad. Top I'll be 6 honest. top 6 picks themselves, like like you said, Rajat Patidhar. I don't know how he's coping up with. He has been in very good form, and then he had very bad 3 tests against Mhm. England. Then when you come to number 4, right? If you go for Cam Green or Maxwell, I think Maxwell should be there or 3 or 4 Sure. because there's no Yeah. point. And then Cam Green will be a finisher, so that will be a new role. And then Yeah. you are saying Mahipal Lomrod, and you'll have at number 7. Obviously, you'll have Dinesh Karthik Dinesh Karthik. because you need a Yeah. keeper too, right? अब इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ मेरे हिसाब से ये है कि ये मूव जो है ना फैफ डु प्लेसी को कैप्टन बनाने का, ये इस सीजन इन्हें हर्ट करेगा. In a hurt karega. ठीक है. I was thinking the same because then you are only Yeah. left with one option of an overseas bowler. बॉलर बिकॉज exactly. बिकॉज अगर फॉर्म वाइज देखा जाए तो आई थिंक विल जैक्स डिजर्व्स टू प्ले. I ठीक है, agree. एक तो I यंगस्टर है, agree. प्लस नॉट ओनली बैटिंग, ही इज अ वेरी हैंडी बॉलर टू. Yeah. ठीक है, Yeah. लेकिन जस्ट बिकॉज फैफ कैप्टन है, अगर मैक्सवेल 1-2 गेम में नहीं चला ना तो ये देखना वाइब्स आ जाएंगे कि विल जैक्स को मैक्सवेल की जगह खिलाओ. यू कैन डू Hmm. दैट. मैक्सवेल को You आप can. ड्रॉप नहीं कर सकते हो. You मैक्सवेल can. इज अ मैच विनर. तो Yeah. ये Yeah. 7 में फ्लॉ है. वो अभिषेक व्हाट डू यू फील यार, 7 में क्या लगता है तुझे ये? यार 7 आई थिंक ऑलमोस्ट फिक्स्ड है. मेरा कंसर्न इसमें यही है कि अगर मान ले जैसे फैफ इज आउट ऑफ फॉर्म एंड मतलब वो बेसिकली उसका प्रॉब्लम ये हो जाता है, बीइंग अ कैप्टन एंड अ फॉरनर ही इज बेसिकली ऑक्यूपाइंग वन स्पॉट व्हिच इज वेरी Yeah. क्रिटिकल, right? Then I think Maxwell, either Maxwell, Karthik, and Lomror, or one of Rawat, Karan, or Karthik would be their finishers, right? So उस हिसाब से I would still prefer कि Maxwell maybe give himself more time and get him at 3 or 4 rather than pushing him at 5 or 6 just to Right. finish. But वही But वाली point है. Like sorry, complete your point. go ahead. Yeah, go ahead. नहीं, मैं यही बोल रहा था बिकॉज यू आर राइट. वो आई थिंक कैम ग्रीन आने से सिर्फ एक कॉन्फिडेंस आया है टीम में, इररिस्पेक्टिव बाहर कौन बेंच पे बैठा है, कि भाई कैम आफ्टर लास्ट सीजन मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप 3 आपके फैफ, विराट और ग्लेन मैक्सवेल होते थे, उसके बाद बैटिंग की लंका लग जाती थी, राइट? तो अब एटलीस्ट इस बार ये है कि यू हैव कैम ग्रीन एट द फिनिशिंग एंड एज वेल, सो दैट एड टू दैट फैक्टर. बट अगेन, as Kush said, form plays a big role in on these top 6 because most of them either have not played cricket for so long, either is out of form, or they Yeah. don't know where they're gonna bat. The number 7 Dinesh Karthik also, he has been in Yeah. form in league obviously, but Yeah, cricket वो क्रिकेट में नहीं खेला काफी टाइम से. yeah, ठीक yeah. है. उसके बाद अब आपके पास 4 स्लॉट रह जाते हैं. जो हमने टॉप 7 डिस्कस करे हैं, 4 स्लॉट रह जाते हैं. उसमें से आप फॉरेन सिर्फ एक ही खिला सकते हो. Yeah. ठीक है. देन फॉर दैट स्पॉट
तीन लोग फाइट कर रहे हैं, रीस टॉपली, लॉकी फर्ग्यूसन और अल्जारी जोसेफ। Yeah, Yeah. सो आई एम नॉट श्योर किसे खिलाएंगे, अब पैसे जिस हिसाब से दिए उस हिसाब से yeah. अल्जारी जोसेफ बनता है। He has been in form too, दो लाइक वेस्ट इंडीज के लिए बहुत Even अच्छा परफॉर्म किया है। Reese Topley is in form as well. I've been following him wherever he was playing, and he was picking up wickets. But I feel like Reese Topley is the kind of a bowler who might not give you all 14 games. एग्जैक्टली या Yeah, वो भी है, और सेकंड चीज रीस टॉपली का आपको फिर ये भी नहीं पता कि वो 4 ओवर भी आपको हर गेम में देगा या नहीं देगा। दो शुरू Exactly. वाले तो पक्का है, वो तो मुझे hmm. 100% है, बट जो डेथ बॉलिंग है ना, आई डोंट थिंक ही हैज फिगर्ड दैट आउट। और उसके बाद फिर अब ये तीन बॉलर इस पोजीशन के लिए फाइट करेंगे, या फिर आपके पास ऑप्शन है टॉम करन, अपनी बैटिंग को लंबा करो लेकिन फिर बॉलिंग तो भूल जाओ। नहीं भाई, Yeah. फिर तो वो वाली बात होगी कि भाई जिन्ना स्वामी में सबने पिटना है तो बैटिंग स्ट्रांग कर लो हर गेम में, या तो हम चेस कर लेंगे या फिर हम 200 से ऊपर स्कोर या मारेंगे, 220 से ऊपर। और जब ये स्लॉट के लिए ये 4 बंदे फाइट कर रहे हैं, और अब उसके बाद बाकी 3 स्लॉट में अब आप बंदे ढूंढ रहे हो भैया किस किस को खिलाएं, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, एंड देन करण शर्मा, मयंक डागर, किसको खिलाएं ये समझ में I नहीं आ I रहा है। think that's an easy pick because Alzari Joseph, let's say Reece Topley or him plays, but Siraj and Akashdeep picks themselves, and then you ओके have to have one spinner which is Karan Sharma or Swapnil Sir. Hmm. ओके, तो पहला गेम चेन्नई में है, तो उसमें तू Yeah, सिराज, आकाशदीप और क्या कहते हैं, तो 3 पेसर लेके खेलेगा। तीन पेसर और दो स्पिनर हो गए आपके पास, अरे तो Glenn Maxwell and the other guy, and then if plus we are playing in sorry, Chipok. चिपॉक या Chipok. So then again, I don't know how effective, but if Cam Green is fully fit, he can bowl those seaming bowling as well, seam bowling as well. नो नो But डेफिनेटली yeah, ही विल बो, कैमरिन I मस्ट है। personally don't think this is a good team, traveling team. चिन्ना स्वामी में ये शायद जीत जाए कुछ मैचेस, बट ट्रैवलिंग में I have my doubts with this team. आई थिंक हमारे क्रिकबक के सब्सक्राइबर समझ जाएंगे कि करण आया किस फ्लॉ में था और हमने उसे किस फ्लॉ में डाल दिया एकदम से, अचानक से इसने एडमिट कर लिया कि इट्स नॉट द राइट टीम। देखो यार, at the end of the day, we analyze cricket and we can't live in delusional world. So emotions are still there. Still being optimistic, thinking that RCB will try and win the cup. But looking at their squad, I'm not impressed. इस Yeah. साल का अपना नाम दे। Come on, नहीं de bro, I'm de. बेसिकली लगता नहीं फ्लैट पिचेस में कैम ग्रीन वुड बी एज इफेक्टिव as somebody who hits the deck really hard. I know Cam Green does too, but मुझे ऐसा लगता है फ्लैट पिचेस पे मुश्किल है, उसकी bowling option is not as effective as it would be on a probably a seaming wicket or a wicket that holds up. So let's see. या Yeah. तो But आई थिंक yeah, आई थिंक इसको अगर हम सम अप करें और हम ये बात करें कि 3-4 फैक्टर्स अगर हर टीम के हम रेट करें आउट ऑफ 10, like बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, देन डेप्थ एंड बेंच स्ट्रेंथ, डेप्थ एंड बेंच स्ट्रेंथ हो गया, और फिर कंडीशंस के हिसाब से टीम अकॉर्डिंगली, तो आई गेस इट विल बी अ बेटर थिंग। तो करण, अकॉर्डिंग टू यू, हाउ वुड यू रेट आरसीबी's बैटिंग आउट ऑफ 10? yeah, batting I would definitely try to rate higher. I would say 8 out of 10. Considering बॉलिंग like they, yeah, bowling, I think if I leave that spinner aspect, I think they have a decent bowling attack, but I would still say like 6 or 7. 6 or 7, okay, Yeah. and how about the depth? Depth, again, it depends how season is going on for the top 5 6 batsmen. अगर डेप्थ पे आ गई बात तो आई डोंट हैव हाई होप्स बिकॉज लास्ट ईयर वो अगर कुछ गेम्स हारे हैं जो जीती हुई गेम्स थी वो बिकॉज दे डिडंट हैव डेप्थ इन देयर बैटिंग, बट आई फील विद कैम ग्रीन कमिंग इनटू प्ले वो प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो गई है, तो आई स्टिल लाइक टू गिव देम लाइक 7 out of 10. 7 out of 10, okay, and 4 foreigners, how would you rate their 4 foreigners who will play the game out of 10? How would you rate them? And again, being optimistic, thinking everybody's going to be in form, I think they are more heavy batting reliant than bowling. But considering Maxwell can give them few overs, Cam Green can give them few overs, and if Alzari Joseph proves that his price tag is worth, I think that I would still say like 7. Hmm. 7, okay, and 7 Indians, 7 Indian players. 7 Indian players, I think it's a very good, leaving, no disrespect to anybody, but Lombror is one I don't know if
That's a good one. But Vishek was another one who was bowling well, decent, yeah. And with Akashdeep gaining that experience and confidence from playing Test cricket and Siraj bowling, I think their bowling is better. Just leaving that spinner thing aside, I would say like 6 or 7 on that bowling front. ओके अभिषेक कमिंग टू यू क्विकली आई ये तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा है I बेचारा know. दिल से Yeah. जुड़ा हुआ है तो Yeah. कमिंग टू आरसीबी बैटिंग आउट ऑफ 10 यार Batting, I think I would rate 8.5. 8.5 I will rate 8 as well Yeah. bowling Bowling, 5.5. Yeah, यार ऐसे ना कर. 5.5 yeah मैं for me it's 5 because I don't मुझे सिलेक्शन ही नहीं पता भाई कौन से बॉलर खेलेंगे exactly they that. don't have proper spinners proper bowler नहीं है Exactly वही problem है. ठीक है डेप्थ Squad depth यार मैं फिर भी I think 7.5 दूंगा because just with the fact कि in terms of what they have to offer, all their foreigners plus whatever they have in reserve, so 7. squad depth for me is 4 Yeah. I'm not giving anything yeah because I don't understand man they don't have any players they are bits and pieces players trust Yeah. me when it अब वो तो देख परफॉर्मेंस दिखाएगी वो तो हमारे जैसे तू सपोर्ट कर रहा है तो तू तो यही सोचेगा सब फॉर्म में आए बट दे आर बिट्स एंड पीसेस प्लेयर यार कैम ग्रीन हैज नॉट प्रूवन हिमसेल्फ एंड टॉम करन इज नॉट अ प्रूवन कमोडिटी तो भाई देखते हैं कि क्या इनका बनता है उसके बाद हाउ वुड यू रेट देयर 4 फॉरनर्स जो प्रीटी मच होंगे मैक्सवेल फाफ डुप्लेसी कैम ग्रीन and one bowler out of Lockie Ferguson, Alzari Joseph. Yeah, Or Reece Topley. if assuming Lockie Ferguson plays, I'd still rate their foreigners as 8, even though Faf's का form जैसा भी हो, but historically he has been a tremendous player in IPL. So given based on that factor, 8. Yeah, I would rate that 9 because इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके ये 4 फॉरेन प्लेयर होंगे क्योंकि अगर ये नहीं चले ना तो ये लोग मैच नहीं जीत सकते Agreed. बहुत ही Agreed. रेयर चांस है कि 200 की चेज विराट और रजत पाटीदार अकेले जिता देंगे I agree. I agree with that. या एंड व्हाट अबाउट द 7 बिकॉज मैं एक बात बताता हूँ हम जो पॉइंट्स कर रहे हैं ना हमें ये भी कंसिडरेशन करनी चाहिए कि हम दूसरी टीम्स के बारे में भी हमें आइडिया है तो उस हिसाब से हम कंपेयर करें तो और 7 इंडियंस 7 Indians, I'd rate 7. I think क्योंकि I know domestic tournament है but थोड़ा सा जो ट्रैक्स ऐसे हो जाते हैं T20 बॉलिंग आई नो सिराज और आकाशदीप की आई डोंट नो मतलब आई डोंट ट्रस्ट दैट या मेरा 7.5 है जिसमें से 5 कोहली के लिए सिर्फ 2 रजत पाटीदार के लिए 2 रजत पाटीदार नहीं आई थिंक आई विल से एक सिराज और रजत पाटीदार के लिए बाकी 0.5 है बाकी 4 प्लेयर मेरे को नहीं पता क्या करेंगे दिनेश कार्तिक इज ऑलवेज लाइक वेरी अनप्रिडिक्टेबल वो अचानक से कभी तो एकदम से नंबर 1 फिनिशर बन जाता है और उसके बाद फिर कभी उससे भैया बॉल टच नहीं हो रही होती तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है Yeah, I think 7 भी इसलिए बना है क्योंकि कोहली 11 out of 10 और बाकी का एवरेज मिला के 7 बन रहा है एग्जैक्टली बट ओवरऑल आरसीबी की मतलब मैं अगर 10 में से बोलूं तो आई थिंक दे विल बी समवेयर अराउंड 6.5 to 10 6.5 to 7 6.5 to 7 7 I think is a fair number. I agree to that. Oh, you think it's fair? Then it's 6 for me. I will give it up. 6.5 और 7 का कंपटीशन होता है नहीं नहीं 7 is fair. Obviously bro, जितना ज्यादा मिलेगा उतना ही लोगे ना यार. But anyways, any last points guys? I think we have summed up really well. Yeah. I think it will be a good thing that how they play in Bangalore. Problem with RCB has always been कि यार जब ये फैफ और जो विराट है ना और मैक्सवेल जो है ये तीनों ऐसे प्लेयर हैं कि ये हर जगह जाके रन कर सकते हैं इनकी प्रॉब्लम ये रही है यार अपने बैंगलोर में अपने मतलब होम ग्राउंड का कोई एडवांटेज नहीं उठा पाते दे ऑलवेज लूज Because bowling is an issue, right? Yeah. तो वो सेम इशू है persistent इशू है कंटीन्यूअस इशू है that hasn't been resolved. चलो I'm sure हम तीनों होप करेंगे कि आरसीबी जीत जाए so thank you guys I appreciate your wishes on that. आरसीबी जीत गया सोशल मीडिया कप बस. Yeah, social media cup RCB इस साल भी नमदे. Okay, thank you guys. I think we're gonna wrap this video up. We'll be coming up with more squad reviews for other IPL teams. Stay tuned. Keep watching Cricket Bucks. Thank you.